Yes, let me just share my screen. Um, the thing that as we were discussing, you can remember, we were talking about these batch data communications, which we do recording in SHTP and we convert that recording into a program. Then we write all the mechanism to attach a file to get data from file to your internal table, and from internal table to the through BDC recording, it will upload the data to the standard table. Can you recollect? Yes. Okay, this is the program that we had written. Right? So if you see in this program, we just did a parameter, we called it explicitly. When we generated a program, we did not have this parameter, right? So then we have declared file name here, and we have, this was already there. We just did what? This was LT message we did to get the written messages from the recording. If you see, when we run T code BV11, we used to get some warning messages that this customer already exists, some error in the customer or some value error, something all that. Whatever the messages come come on that screen, you will get in all your LTM messages. Okay. That is why I have declared in LT messages. And this is our structure. Always keep in mind your file should have the same structure as you declared in your program. File means the loading file. So this is my file. Now I'll take this file and put it in an Excel. If you go to Excel, take a blank, and whenever you take anything in Excel, always do like select everything, convert your Excel to text because you're copying from text, and put your data here, Control V. Okay, so this is your data now. So if you see, whatever data you have given here will load in your program. The structure KSHL is the first column, KSHL, and BQR the sales or give you a second column, and KDNR is the customer, which is this value, and then we have partner function, which is ZD, and then we have NACHA, which is transmission medium, which is 2. Right. So always make sure that Can you just check whether he is waiting in lobby? I think he's waiting now, not finding the proper. Sorry? Service is not finding the proper link to join. एक बार शेयर करो ना उनसे. अच्छा, you don't have. I think he joined like that. Yeah, he is joining. Hey, hi, sir. Yes, I was having network problem. Sorry for that. Not an issue. Actually, we just started only. Okay. So that is what I was discussing regarding the BDCs. So just a quick reminder I'm doing. What all we did. We have created a recording. We created a program to that recording, converted it to program. So when we came back to the program, we make some changes in the program. So first thing that we did, we declared an input file where you will attach your file. Okay. Then what we did a file name which we will require as independent variables, and we declared these three standard internal tables and work areas. These are standard ones which we require for this part. For this part, we will need that. Okay. So this is a structure. This is what I'm explaining. Your structure should be same as your file. Always have whatever the how many number of columns you have in your file should be equal to your structure in your program. Because all of your data will come into these fields only internally. Okay, so that is what we saw last class, and we declared an internal table and work area for this data. Okay, ultimately we have to get this data in our internal table. That is why we declared an internal table and work area for this structure record. Then what did we do? Then we have called a F4 help for what? Peek in file, because when we execute this program,
तीन फाइल को कुछ भी ये नहीं था, देयर वाज नो F4 functionality so that it can browse through my system, right? So that is what, agar if you want to attach a file, you'll have to manually copy paste the path and file name. So to avoid that, what did we do? We called that this function module. This function module के अंदर what do you do? You want change this and this, just keep in file as your input variable. जो भी parameter में declare करते हो ना, that same name you can give it here. Okay, here you should be in colons and here it should be in open. Why? Field name हमेशा colon में रहेगा and file name. जब select होने के बाद जो output कौन सा file है करके with path file name आता है, that you will get in this file. That is why it should be a variable. So then what did we do? I think this we have, because वो data conflict आ रहा था, because as I said, जब भी कोई भी function model use करते हो, your file names and everything should be as declared by the function model. So file name was a string in the function model, and our file name was a file name in our program. So there was a conflict in the data type. That's why what did we do? We have created a variable, a file name, which जो function model के अंदर type है वही type हमने declare किया है, right? String. And we pass जो भी हमारा file select किया है हमने, वो file का नाम हम लोग इसमें pass करें, and this we are giving in it GUI upload. What GUI upload will do? Can anyone tell? What is the use of GUI upload? File display file. Oh, हाँ, Okay. it So what converts the I'll file. do? Yes, you are giving here file name and you're getting data in here. So see all the very important text. Here only you get all the data. You are giving the file name, और जो file के अंदर data है, you are getting in your internal table. Clear? And if you Yes. remember, we were facing some issue here. क्या issue आ रहा था? डेटा प्रॉपरली नहीं आ रहा था, बीच बीच में हैश वैल्यू आ रहा था, मूव हो रहे थे, हाँ, एक फील्ड का वैल्यू एक फील्ड में जा रहा था, तो क्या नहीं नंबर. सो आई जस्ट ट्राई टू डू दैट फॉर मूवी. मैं वही फाइल सेलेक्ट कर रही हूँ सेम एज रन इट अगेन. F6 और मेरी इंटरनल टेबल में मैं वैल्यूज चेक करती हूँ. See, you were getting something like it. हमारा वैल्यू ऐसे था ही नहीं. करेक्ट. See, ours was ZB10. यहाँ पे 0001 था, and 1 got shifted here, and here it was 00399 था, which got shifted here, right? So ये सब problem क्यों आ रहा है? I just found the application for it. So I'll go back to my program. हम लोगों का जब भी we give any value here, तो internally हर field के अंदर separation क्या होता है? Hash रहता है. This is a standard ABAP. या आप इसको ओपन करो और यहाँ पे हैश वैल्यू दे दो, सो दैट फाइल सेपरेटर वो डिटेक्ट करे. नाउ अगर मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, इट वोंट गिव मी दैट वैल्यू. मैं F6 करती हूँ, डबल क्लिक ऑन IT रिकॉर्ड, ओपन दिस IT रिकॉर्ड, तो अभी वैल्यूज देखो प्रॉपर आ गया. Yes. You just have to give that file separator as hash. Second very important parameters में. Okay. Okay, तब जाके आपका डेटा एकदम प्रॉपरली इंटरनेट टेबल में रिफ्लेक्ट करेगा. सो व्हाट नेक्स्ट नाउ? So as I said, BDC program is not for loading single record. Okay, so you have Next one. the whole purpose only is to create a. So what I'll do, I'll just create some 5 records. सब सेम नहीं होना चाहिए. Again, I'll just try to change only the customers. जो ऑलरेडी टेबल पे है ना, मैं उसी को थोड़ा मिसमैच ऊपर नीचे करके मैं ले रही हूँ, मतलब कॉम्बिनेशन, क्योंकि वी आर यूजिंग सेल्स और 1, राइट? और ये सेल्स और 1 और ZB10 के इतने सारे वैल्यूज बनेंगे, राइट? सो आई मीन जरा सिर्फ 4 ही है,
सो आप क्या करो, ZB10 ये मत चेंज करो, बट कस्टमर्स ये वाले ले लो, सो दैट नया वैल्यू क्रिएट होगा. व्हाई? बिकॉज दीज आर द की फील्ड्स. वेन एवर एनी ऑफ दीज 4 वैल्यू चेंजेस, न्यू एंट्री गेट्स क्रिएटेड. यहाँ पे दिख रहा है ना, ब्लू लाइन से दिख रहा है, बिकॉज दे आर की फील्ड्स. आई होप की फील्ड्स क्या है, रिमेम्बर, यू गाइस रिमेम्बर. सो आपको ये वाले वैल्यूज, आई जस्ट कॉपी दीज 5 वैल्यूज, और 4 ऑल्सो इज फाइन, बिकॉज एक तो हमारा ऑलरेडी है. So I'll just paste it here. And again, just don't paste it here like that. एक बार डबल क्लिक करके ना इसका कन्वर्टेड वैल्यू, कभी भी वैल्यू अनकन्वर्टेड ही आपको एक्सेल में डालना रहता है. बिकॉज अगर नंबर रहता है ना, ये इफ आई गो लाइक दिस, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगे ना तो लीडिंग जीरो आ जाते हैं. तो यू हैव टू ऑलवेज टेक दिस वैल्यू, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल नंबर है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट हैविंग एनी लीडिंग जीरो. सो दैट्स व्हाई यू कैन डायरेक्टली सेलेक्ट them. तो मैंने ये वाले वैल्यूज के 5 इसका डेटा क्रिएट कर लिया. एंड आई कॉपी दिस वैल्यू एंड पुट इट इन माय टेक्स्ट फॉर्मेट. अल्टीमेटली मेरा इनपुट क्या है, टेक्स्ट फाइल. So I'll go back and save this. Okay, so I'll close. मैं फिर से रन करती हूँ. अभी 5 वैल्यूज आने चाहिए तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर, इंटरनल टेबल के अंदर. So what I'll do, I'll go back again and I'll run my T code for the program. I'll attach the file. I'll run it. So मैं F6 करती हूँ. Whenever I say F6, तो ये सेकेंड वाला बटन है, right? Execute वाला. F5 is your first button, F6 is your second button, F7 is your third button, F8 is your close button. Continue, मतलब एकदम खत्म कर देगा प्रोग्राम. So F6 is step by step. F6 और F5 का डिफरेंस क्या है? When you press F5, अभी फिर से मैं F5 प्रेस करूंगी ना, ये वाला ये कर्सर ना फंक्शन मॉड्यूल के अंदर जाएगा. GUI फंक्शन मॉड्यूल के अंदर जो जो कोड लाइंस है ना, SE37 में अगर हम लोग को सोर्स कोड देखते हैं ना, वो सब में जाएगा. इफ यू डायरेक्टली प्रेस F6 तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके नीचे रह जाएगा. सो इट विल डायरेक्टली कम हियर 95 पे. इसीलिए फंक्शन मॉड्यूल पे हमेशा F6, अनलेस यू डोंट वांट टू डीबग इनसाइड कोड. आपको अगर यहाँ फंक्शन मॉड्यूल में ही प्रॉब्लम में दिख रहा है, देन यू कैन गो F5. सो ओके, क्लियर. Yes. तो सी अभी मेरे इनपुट, मेरे इसमें 5 रिकॉर्ड्स आए हैं. राइट डेटा, एवरीथिंग लुक्स वेरी क्लियर. फाइन, सारा वैल्यू, एंड यू कैन कंपेयर विद योर एक्सेल. गेटिंग? ओके. सो वंस दिस डन, अगर आपका फंक्शन मॉड्यूल बराबर काम नहीं किया तो यू विल नेवर हैव योर साइज अबर्सी 0. आई ऑलवेज लुक एट द साइज अबर्सी, एज आई विल से साइज अबर्सी 0 आया है मतलब सक्सेसफुली हो गया है सब कुछ. अगर ये 1 2 3 4 कुछ तो आता ना, तो ये वाले वैल्यू एक्सेप्शंस रहेंगे. अगर 1 आएगा आपके साइज अबर्सी में, दैट मीन्स फाइल ओपन एरर. 2 आया है, फाइल रीड एरर रहेगा. नो, 3 आए हैं साइज अबर्सी, दैट मीन्स नो बैच. 4 आया है मतलब फाइल्स ट्रांसफर का, इनवैलिड टाइप फॉर फाइल, नो अथॉरिटी फॉर 6. ऐसे दीज आर द यूजर्स ऑफ साइज अबर्सी के एक्सेप्शंस. गेटिंग द मैसेजेस आल्सो दीज वन. अभी हम लोग क्या करें, विल गो फॉर लूप नाउ. अभी देखो ये लूप है. अभी लूप के अंदर मैं क्या करूँ, एक एक जो रिकॉर्डिंग बनाया था वो सारा कोड मैं अपने फाइनल किस में डाल रही हूँ, GLT-BDC डेटा में डाल. बिकॉज अल्टीमेटली मुझे ये सारा कोड मेरे को इधर दिखाना है. तो अभी मेरा लूप कितनी बार 5 टाइम्स घूमेगा. वाई? बिकॉज आई हैव 5 रिकॉर्ड्स इन माई फाइल. So I'll just press F6, F6, F6. अभी देखो, फर्स्ट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हैव कम इन LTBDC डेटा, जो 14 लाइन से. करेक्ट. Yes. आई थिंक आपको यहाँ पे एक इश्यू आएगा. यू विल हैव टू ईच, ये कॉल ट्रांजैक्शन आपको लूप के अंदर लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये VB11 क्रिएट्स ईच रिकॉर्ड एट ए टाइम. तो अगर आप वो सारा लेके एक साथ नहीं क्रिएट कर सकते, यू हैव टू पुट योर BDL कॉल ट्रांजैक्शन इनसाइड द लूप. अदरवाइज क्या होगा फिर, 14 into 5 मतलब hundreds of data will accumulate और at a time create नहीं होगा. So each record should create once. So what I will put it inside the loop. Okay. And once this is done,
clear LT VDC data. Okay, this is very important step. VDC data, same here. IT is so I'll do again now. I'll put that that's a file. तो भी एंट्री रिकॉर्ड में 5 एंट्रीज है और ये पहला वाला एंट्री ए 1 by 1 इट विल गेट क्लियर राइट 1 2 3 ऐसे 1 एक एक करके वो क्रिएट करेगा नाउ आई डू F6 फिर से करें ना आपके एलटीवीडीसी डेटा में कितने एंट्रीज आए 14 एंट्रीज आए फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया है आपका ZB10 सारे वैल्यूज नाचा सब कुछ आ गया है सो आई जस्ट क्लिक ऑन अभी आपके एलटी मैसेजेस डबल क्लिक करो तो जीरो है मतलब जो मैसेजेस आए हैं इंटरनली वो जीरो है तो आई जस्ट क्लिक ऑन एस F6 में जाकर तो अभी मेरे एलटी मैसेज में 2 एंड वैल्यूज आए लोग ये मैसेज टाइप कभी भी देखने का यहाँ पे एरर है मतलब क्रिएट नहीं हुआ है अगर वार्निंग एंड एस मैसेजेस एस मतलब सक्सेस मैसेज देन वी आवर डेटा गॉट क्रिएटेड तो अभी मैं NACS में ये तो मैंने पहले क्रिएट किया था आज ही तो जस्ट रिफ्रेश दिस बिकॉज मैंने क्या किया आज का डेट डाला हुआ इनपुट में आज का डेट डाला है मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो मेरे 2 एंट्रीज आ जाएंगे दिस इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड 3099 वाला क्लियर गाइस माय फाइल इज हैविंग 3099 समझ रहे हैं Using that V 11 11 that yes code. this program is for T code VV11 Oh, yes. अभी मैं नेक्स्ट फिर से ये लूप के अंदर घूम रहा है ना नेक्स्ट फिर से चलाएगा वो फिर करेगा क्लियर सो अगेन इट विल गो बैक टू लूप फिर से जाएगा द नेक्स्ट रिकॉर्ड इट विल गेट क्रिएट आई थिंक वी हैव टू क्लियर एलटी मैसेज आल्सो देखो एलटी मैसेज के दो जो प्रीवियस के वैल्यूज है वो सेम है दैट इज आल्सो यू शुड कीप इन माइंड व्हेनेवर यू आर वर्किंग जस्ट लाइक LTPDC डाटा ITPDC है यहाँ पे एलटी मैसेज को भी क्लियर लिख दो मेरा फिर से 2 वैल्यूज आए लुक्स लाइक दिस इज आल्सो क्रिएटेड या दिस इज आल्सो क्रिएटेड तो नेक्स्ट वैल्यू क्या था मेरा SND SN बोन राइट सो जस्ट लाइक दैट अगर मैं इसको इफेक्ट करती हूँ तो पूरा ही कंप्लीट कर लेती हूँ तो क्या हो गया कंडीशन रिकॉर्ड सेव तो मेरे टेबल में कितने एंट्रीज आए टोटल 5 पहले से ऑलरेडी क्रिएट है मतलब टोटल 6 रिकॉर्ड्स होने चाहिए दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट ऑल दीज 5 आर एज पर आवर 5 ऐसे बोन है एक BPM है एंड वन इज BPM अंडरस्कोर 2 एंड क्लास वन इज DDI गेटिंग राइट okay this is how BDC program works this is we use for creating standard loading of data. So this method we call it as a call transaction method of querying. इसको हम लोग call transaction because हम लोग call transaction use कर रहे हैं ना transaction method. Call transaction क्यों बोल रहे बिकॉज यहाँ पे हम लोग call transaction यूज कर रहे हैं ये वाला मेन स्टेटमेंट है यहाँ से ही सब इसके अंदर आए यहाँ से ही लोड होता है आपका डेटा देयर इज वन मोर मेथड व्हिच इज कॉल्ड सेशन मेथड एकदम सेम ही है उसमें भी मतलब रिकॉर्डिंग तो सेम ही करना है प्रोग्राम सेम ही जनरेट करना है तो ओनली स्टेप्स प्रोग्राम के अंदर के स्टेप्स पूरे डिफर हो जाते हैं व्हिच आई जस्ट शो
session method. That is called session method. एक call transaction method and there are two types basically, call transaction method और session method. ये session method, session recording वगैरह सेम ही आ जाता है. BDC session method. Right? Let me activate. तो यहाँ पे भी सेम 3 फाइल जो है अपलोड से इंटरनल टेबल में लेना है और यहाँ पे भी सेम ही प्रोग्राम तो सब सेम ही है. बट क्या होगा आपका लोड, जहाँ पे कॉल ट्रांजैक्शन सब लूप के अंदर आप कॉल ट्रांजैक्शन यूज करते थे, उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बीडीसी ओपन ग्रुप और बीडीसी क्लोज ग्रुप करके दो ओपन करते हैं. इसके अंदर एक बीडीसी इंसर्टेड, दीज 3 फंक्शन मॉड्यूल्स यू हैव टू यूज. तो लोड दे देगा, यहाँ पे देखा बीडीसी इसको लूप करा है फिर उसको लोड किया है. द सेम यू हैव टू, सिंपल है. वर्क वाइज दोनों का सेम है बट यहाँ एक मेथड चेंज हो जाता है. जहाँ पे कॉल ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली लूप के अंदर कॉल ट्रांजैक्शन यूज करते हो, यहाँ पे क्या करना है, यू आर जस्ट यूजिंग द 3 फंक्शन मॉडल्स. यहाँ पे पहले बीडीसी ओपन ग्रुप करना है, फिर बीडीसी इंसर्ट करना है, फिर बीडीसी को क्लोज करना है. सो यू माइट आस्क नाउ व्हाट इफ, अगर दोनों का पर्पस सेम है देन व्हाई देयर आर टू, राइट. सो जनरली क्या होता है, because BB11 is a very small data and it is only one screen जो involved होता है. तो जब मैं आपको ME21 इनका लोड मेथड दिखाऊँ कल बोलूँगी ME21, there's so many tabs, there are so many buttons. ये सब क्लिक करना पड़ता है, ये सब क्लिक करना पड़ता है. These all there are tabs और ऐसे सब tabs वगैरह. If anything of that sort complex screens है, screen के अंदर बहुत सारे screens involved है and process the complex है, then you always go for session methods. That is right. इससे क्या होता है, आप स्क्रीन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो प्रोग्राम को कि एक रिकॉर्डिंग पे एक ही स्क्रीन नंबर आ रहा है. तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनली वो प्रोग्राम सब ले लेता है. इंसर्ट में जब आप ओपन ग्रुप करते हो then it will directly open go to that report and उसका रिकॉर्डिंग जो ओपन करेगा and यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट करेगा डेटा and you will just close that. Just see the program lines and let me know. पहले तो आप ये all transaction वाला just go through the program lines. उस पे कुछ डाउट से देखो, then we'll come to the session method. इस पे कुछ है आपको questions, please ask me. Any doubts guys here? ये प्रोग्राम का नाम लिख के रखो, noted down करो because Yes. it's for this simple thing you will require a recording. Recording पे डिपेंड मत करो, की पॉइंट्स वगैरह आप नोट डाउन करते जाओ. And this also. ये सेशन मेथड रेडी टू यूज नहीं है. इसके अंदर इफ यू गाइस वांट, ये फाइल इसमें ना F4 हेल्प का वो नहीं लगा हुआ है, दैट यू गाइस कैन अटैच. टेम्पलेट वगैरह सब सेम रखा है मैंने. फील्ड्स वगैरह थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बट या फिर व्हाट यू कैन डू, ये जो प्रोग्राम है ना, इसको ही दूसरे प्रोग्राम में कॉपी करके यहाँ पे ये वाले पार्ट के ऊपर, इस वाले पार्ट के ऊपर एक बीडीसी इंसर्ट सॉल्व ओपन ग्रुप करो, फिर इंसर्ट करो, फिर इसके नीचे बीडीसी क्लोज ग्रुप कर लो, बस एवरीथिंग इज ऑल सेम. मतलब रेफर करो इसको. या सर्विस करो. Yeah, in this program, no session. After that perform, there is LV output. This one. हाँ, LV आउटपुट कहाँ पे? हाँ, ऊपर 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 ऊपर. this one. This. हाँ, In यहाँ this पे perform, there is difference, I think. So, यस डिफरेंस नहीं, उन्होंने लिखा अलग से, इट इज अच्छा. सेम. देखो yes. हमने 2 लाइन पे लिया है नीचे.
ओके ओके हम लोगों ने ये वाला फर्स्ट है, ये भी उसके अंदर, अगर मैं इसको भी इधर बैक स्पेस करके ऊपर लेके जा सकती हूँ, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड से वैसे ही आया, वी केप्ट इट लाइक दैट, राइट। तो उन्होंने वैसे ही किया, सिंगल लाइन में ले लिया है टोटल, अच्छा ओके फील्ड वैल्यू और हमारे इनपुट का वैल्यू, ठीक है। ओके कोड एवरीथिंग इज ओके कोड 0 0 मतलब ओके कोड का वैल्यू 0 0 सब कुछ सेम ही है। स्प्लिट स्प्लिट, हाँ, मतलब ये वाला मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ भी अगर डेटा लेवल पे इंटरनली कुछ चेंजेस वगैरह है ना, तो वो सब करना पड़ता है, बट यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं है बेसिकली, चेंजेस कमेंट डेटा में। मतलब होल आइडिया समझा ना, प्रोग्राम का फ्लो कैसे जा रहा है। आशीष आपको हाँ फ्लो देख लो आप, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं पहले, पहले तो फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इससे यूज टू हो जाओ जीओआई अपलोड से, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन इन ऑल द कन्वर्जन पे। कन्वर्जन वहाँ पे ही होता है, मतलब फाइल से फ्लैट फाइल से आपके इंटरनल टेबल में रिकॉर्ड आए ना, देन यू कैन प्ले एनी फील्ड। जब तक एसएपी के अंदर आपका वैल्यू आ गया ना, तो यू कैन डू एनीथिंग। पहले फाइल में से डेटा अपने जो इंटरनल टेबल में लाने का ही ज्यादा ये, and always follow that text tab delimited। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके हमेशा, whenever आप डेटा क्रिएट कर रहे हो, इसको सेलेक्ट करके हमेशा क्या करने का, टेक्स्ट करने का इधर से। then once that is done, then you can do like this, copy into your text file। अभी हमें एक्सेल में कर दे इसलिए टेक्स्ट कर रहे हैं, अगर दूसरा डेटाबेस होता तो like what, एक्सेल में डेटा हाँ दूसरा डेटाबेस है, अगर दूसरा सर्वर है, एंड योर लोड मेथोडोलॉजी विल आल्सो बी डिफरेंट। आप तभी जीयूआई अपलोड नहीं यूज करोगे, राइट। अगर कुछ लोग, अगर फ्लैट फाइल है, देन ओनली वी आर यूजिंग योर जीयूआई अपलोड। अगर दूसरा मेथोडोलॉजी है, देन दे विल हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म टू गेट डेटा इन योर इन एसएपी, राइट। या तो फिर कोई यस, एपीआई रहेगा, या फिर कुछ और ही आरएफसी रहेगा जिसको कॉल करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। so तो वो GI upload सेटअप is से, only for दिस GI इज upload ओनली, is यस for Excel। यस, फ्लैट फाइल if एक्सेल रहेगा, टेक्स्ट फाइल रहेगा, और उसके अंदर से फाइल नेम ऐसे, इसको चेंज मत करो, इसको एज इट इज कीप करो। फाइल नेम में आपका डेटा आएगा, फिर इसको हैश कर, इसको एक ओपन करो, और यहाँ पे इंटरनल टेबल एज पर योर स्ट्रक्चर जो भी रहेगा, आउटपुट जिसके अंदर आपका डेटा जाएगा, वो आउटपुट इंटरनल टेबल वाला, देन डायरेक्टली योर बीडीसी कॉल रहेगा, ये सब एंड में कॉल ट्रांजैक्शन रहेगा, नहीं तो एलटी मैसेज। और इसमें एक और एडिशन क्या कर सकते हो आप, ये एलटी एसएमएस मैसेज है ना, इसको एक एल भी दिखा सकते हो, हाउ मेनी डेटा गॉट, आउटपुट में कितने रिकॉर्ड्स आ गए हैं। लेट मी जस्ट डू दैट थिंग। आउटपुट, आउटपुट एल, मतलब सारे रिकॉर्ड्स क्लियरली लोड हुए हैं नहीं, सो दैट यू कैन डू। सो हाउ विल यू डू दैट। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे मैसेजेस बराबर नहीं आ रहे, तो व्हाट यू कैन डू, एक तो मतलब सिर्फ मैसेज नंबर मैसेज टाइप आ रहा है। फर्स्ट यू कैन, देर आर सम स्टैंडर्ड एफएम्स अगेन, इसको अगर आप सिर्फ मैसेज टाइप और मैसेज नंबर दोगे ना, उसका वैल्यू लेकर आएगा, जस्ट लाइक दिस AC93 आई शो यू। आप लिख के रख लो AC93 ऑल्सो, 93 और 91, आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज विद दिस। इसको 93 is to create T code. यस, मैं तो हमेशा ही दोनों में कंफ्यूजन। AC91 इज द टी कोड। 91. हाँ, एसी Then this नाइनटी is वन में जैसे plus. आपने लास्ट टाइम वीके डाला और मैसेज नंबर 065 डाला, तो ये टेक्स्ट आ गया। यू विल हैव अ स्टैंडर्ड फंक्शन मॉड्यूल जहाँ पर आप सेम परफॉर्म करके प्रोग्राम के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो लेट मी जस्ट इफ यू वांट आई कैन डू दैट। 37 में प्रोग्राम का नाम है /47। I think that is a bug. Message table. Okay, I think this one is ID number, and I think of the weekday, and the weekday, and 0461, and this
text format. इधर ऐसे तो और ऐसे आएगा। अगर ऐसे सबमिट किया है ना, जस्ट ओपन द वापी यहाँ पे इनपुट में देख लीजिए टेक्स्ट फॉर्मेट को दिया है, टेक्स्ट फॉर्मेट और टेक्स्ट को भी डिस्प्ले। Document does not exist. This is not the yeah, that you can do like yeah, okay. Text 0463 था ना 065 that's why we are giving the wrong number. It's 065 065 the condition record already exists exactly. So ये जो आ रहा है ना वो है मतलब we can use this one. What मैं क्या करती हूँ अभी इसको मैं कॉल करती हूँ बाकी मैसेज कर दीजिए बिकॉज एलटी मैसेज हमारा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा पैटर्न आई थिंक एलटी मैसेज के अंदर मैसेजेस का एक फील्ड है क्या मैं उसको इधर ही अपडेट कर देती हूँ मैसेजेस मैसेज V1 में डाल देते हैं हम लोग क्या करना पड़ेगा what I'll do loop it LT input अभी वर्क एरिया लेना पड़ेगा तो we have not declared वर्क एरिया ठीक है पैटर्न से कॉल नहीं कर सकते यस पैटर्न से इनसाइड लूप करना मैसेज पैटर्न से हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा बट लूप के अंदर वाई बिकॉज उनको अंदर का डेटा चाहिए राइट वो चाहिए आईडी वर्क एरिया मैसेज का मैसेज आईडी number is work 065 area message. No, you will not give like that. Message number the values क्या है we will see directly. यहाँ पे डबल क्लिक इसका वैल्यू रहेगा डबल क्लिक करके IDs I think MSG ID MSG NR MSG ID MSG NR MSG ID MSG NR language Indian and text format will keep it as ASC. ASC ASC. Okay. So in output we will get in एक आउटपुट का आउटपुट मैसेज लेंगे हम लोग मैसेज के अंदर मिल रहा है ना हमको पेटीएम में मिल
तो आउटपुट मैसेज ले लेंगे. हाँ, we can do. Message is declared as Bhapi written message. Can we just directly take in area message? Message एक बार देखते हैं, हम ऐड तो हटा देंगे. ओके, तो एक डिक्लेयर कर इसको एडी मैसेज का इधर ही area वो here message is not declared, that's why that is error we are getting, right? Yes. Control C, Control V. Okay. नाउ ये तो हो गया. अभी इसके अंदर वैल्यूज आया. नाउ आई वांट टू शो दिस इन माय ALV. आउटपुट में दिखाना चाहते हूँ. So what you can do again, same field catalog create करो, right? And that field catalog आप आउटपुट में दिखा सकते. इसका वैल्यूज कैसे आएगा, लेट मी जस्ट शो. मतलब LT मैसेजेस में बिफोर एंड आफ्टर कैसे वैल्यूज आती है. बिफोर वी कॉल दैट मैसेज, आई कैन जस्ट शो. अभी डेटा तो सब लोड हो गया है. नाउ यू विल गेट की डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला, राइट? हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ लोड कर दिया है. डायरेक्टली इधर आ गई. एलटी मैसेज के अंदर सारे वैल्यूज 5 वैल्यूज है, बट एक एरर है सबका 065. मतलब डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला है. एरर ले लो. Yes. 065 कंडीशन रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिकॉज भी हम लोगों ने अभी जस्ट क्रिएट किया, दैट इज व्हाई. तो ठीक है, ये सारे एरर मैसेज अभी मैं अभी देखो यहाँ पे इसके वैल्यूज नहीं दिख रहे हैं, राइट? you see, मेरे को सिर्फ मैसेजेस टाइप एरर दिख रहा है, मैसेज नंबर आया है. इसका एग्जैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, राइट? तो फॉर दैट व्हाट यू आर डूइंग, आप एक कन्वर्जन ये लूप में चला के इसका वैल्यूज, तो इट इज गिविंग डाउन क्योंकि वो सेम टाइप कॉन्फ्लिक्ट. whenever there is a type conflict वाला डंप है, दैट मीन्स आपको बाकी जो कॉल किया है मैसेज नंबर का, मैसेज नंबर इज स्पेसिफाइड एज द नंबर. इनपुट आउटपुट का वही सेम वैल्यूज देना चाहिए, टाइप डिक्लेरेशन. So that is the error that you can do if you want in the can make that changes here. Apart from that, any other doubts? एक बार go through कर लो. Any doubts? Generally, this is very important that we always give ALB output. आपको देना ही पड़ेगा आउटपुट में, क्योंकि यूजर को फिर पता कैसे चलेगा. वो डिबगर में जाके थोड़ी ना देखेगा कि एरर क्या है. इट शुड ऑलवेज गिव अ रिपोर्ट, आउटपुट रिपोर्ट की जो डेटा मैंने लोड किया उसके अगेंस्ट कौन से वैल्यूज लोड हुआ है, कौन से नहीं हुआ है, व्हाट इज द एरर फॉर दैट, सो दैट वो डेटा फिर करेक्ट करके फिर से लोड करेगा ना यूजर. तो दिस इज इम्पोर्टेंट स्टेप ओनली. गो थ्रू करो क्या क्या स्टेप्स किए, फॉलो किया है. एनी डाउट्स और यहाँ पर बाकी फंक्शन को कॉल किया है ना. वापी मैसेज, हाँ वापी फंक्शन कॉल को भी मैसेज डिटेल्स तरह से. वापी एंड फंक्शन मॉड्यूल सेम ही, जैसे मैंने बोला था आपको. क्या डिफरेंस आएगा, डबल क्लिक करो इसके ऊपर, एट्रीब्यूट्स पे जाओ, ये देखो वापी का रिमोट फंक्शन एनेबल रहता है और फंक्शन मॉड्यूल पे फर्स्ट वाला नॉर्मल फंक्शन डिपेंड रहता है. ये दो ही डिफरेंस है बाकी ऐसा कुछ नहीं. तो आगे आगे जब एक्चुअल कोड वगैरह क्रिएट करते हो ना, तो फिर वो सिस्टम रिपॉजिटरी में क्रिएट होता है. दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एन एक्टिव एंड वापी. दिस इज द मोस्ट used, मतलब mostly asked question in any interviews. What is the difference between an RFC, BAPI, RFC and a function model?
सेशन मेथडोलॉजी सेम जैसे मैंने बोला था, बस एक दो तीन इसको ही हम लोग स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक ओपन ग्रुप में और एक इंसर्ट में देखो लूप एट ही किया है इन लोगों ने सेम, राइट। तो लूप के अंदर ही हमारा जो मेन हमने कॉल ट्रांजेक्शन किया है उसके अलावा हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, बाकी एक क्लोज वाला एक सिनेरियो डाल देना है बस, और कुछ नहीं। बाकी सब सेम, बाकी ओनली सब हाँ लॉजिक वाइज एवरीथिंग इज सेम। सेम इनसाइट। ये भी प्रोग्राम लिख के नोट डाउन कर लो so that you can- इन दोनों को रेफर करके ना मुझे सेम एक एग्जीक्यूटेबल जो बीडीसी BB11 का बनाया है ना वैसा बना के ट्राई करें, हाँ यस मतलब एक एफर्ट लगा दो इसको, हाँ एवरीथिंग लोड सम यस डेटा, एक फाइल चाहिए तो एक फाइल का एक स्क्रीनशॉट ले लो, यू कैन क्रिएट योर ओन फाइल। यस Any doubts guys? Tomorrow we'll talk about enhancements. I think that is the most critical topic of ABAP. This is clear? Enhancements means advanced part, means that No, not advanced Alice, ABAP okay. only, but it's like you're disturbing the standard. Oh, If, as I said, if you have developed something well, now user want to make some changes, उसका अलग business process है, उसको एक और fix चाहिए. So how will you do that? That you have to follow enhancements. okay, yes, स्क्रीन पे कोई कोई वैल्यू ऐड करना है, अभी मैं MA23 एनालिटिक्स शो अभी चाहे पे यूजर को कुछ फील्ड यहाँ पे यही स्क्रीन देखो, बट इस स्टेप ऑफ सिलेक्शन MA21 है, ये स्क्रीन पे बोलेगा मुझे इधर एक और कॉलम चाहिए, इधर एक और फील्ड चाहिए, मेरा एक पर्सनल है, मेरा नाम आना चाहिए. So you cannot just go directly to anything because this is yes, just standard structure, a standard feature. So that is why we use for enhancements. चाहिए थोड़ा read करके आ जाओ. we'll try this one, then Yes, this one try first then. Okay, so okay, fine, right? yes, Yes, मैं एक बार देख के ट्राई करता हूँ. Yes, please. Yes, programs का नाम तो guys, this is from the beginning we should have followed. because सारे ये topics के program names right? Because everything we discuss practically सब किया है ना mostly. So you should have kept it with you. तो क्विकली आपको कभी भी चाहिए तो यू गाइस कैन रेफर दैट प्रोग्राम, ये सब हैंडी रहते हैं अगर आपको चाहिए, बिकॉज दिस सर्वर का एक्सेस आपको 3 महीने का ही रहेगा. इफ यू गाइस वांट यू गाइस कैन डाउनलोड, तो एक बार मैं क्विकली दिखा देती program हूँ. हाँ, copy कर, प्रोग्राम कैसे डाउनलोड करते हैं ना, कॉपी ऑल्सो ये सिर्फ कंट्रोल C भी कर सकते हो आप. हाँ एंड देयर इज वन मोर मेथड कॉल्ड यूटिलिटीज में जाके यहाँ पे मोर यूटिलिटीज, और यहाँ पे देखो अपलोड और डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड करो, यहाँ पे फाइल नेम डालना पड़ेगा आपको, एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा जैसे प्रोग्राम, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोग्राम नेम दे दो. जेड क्या था, जेड टेस्ट file notepad, so how it is, हाँ नोटपैड पे जाएगा notepad, टेक्स्ट फाइल. ठीक है, डेस्कटॉप सेलेक्ट किया मैंने, डेस्कटॉप पे सेव किया, इसको बस अलाउ करो, अपने आप सारा जितना पेज भी करने की जरूरत नहीं. गो टू डेस्कटॉप,
ऐसे फाइल में आ जाएगा, ओपन इन नोटपैड, ये Okay. प्रोग्राम। Yes. दिस इज ऑल्सो मेथड, या फिर आप मैनुअली कंट्रोल सी भी कर सकते This is much better, but हैं। यस, ये बेटर क्यों हो जाता है, अगर आपका इंक्लूड्स वगैरह है ना, तो तब हाँ, भी आ जाते हैं। नाउ बिकॉज सब कुछ हमने एक ही प्रोग्राम में लिखा है, तो दैट्स नॉट एन इश्यू, आप कंट्रोल भी करोगे। ओके, तो आपका पूरा Okay. प्रोग्राम लाइन क्लियर आ जाएगा। So every programs keep it with you because access गया ना, you cannot help anything. डाउनलोड Yes. एंड देन अभी आज हमने क्रिएट किया, तो आप जी आप चाहिए तो डाउनलोड करके रख लीजिए। हाँ. So that is the best from now on you can follow. Okay, yes, then. Oh, yes. Yeah, any doubts you can spend. Or we just try to do the same. Yes, yes. स्टेप्स फॉलो करो, जस्ट ट्राई करो, प्रोग्राम ओपन करो, अपना प्रोग्राम इसको रेफर करो एंड अपना प्रोग्राम बनाते गए ऐसे। अगर सिंटैक्स में कहीं अटके ना, डायरेक्टली गूगल पे डालो, what is the syntax for loop statement in ABAP, what is the syntax for read statement in ABAP, you will get an idea. ऐसे करोगे ना, so you will have a clear picture कि चल क्या रहा है, right? Copy paste तो is good, but when you struggle, it is good that you're struggling. You will find a way. That is what matters. Yeah, good then. Like, Yes. let me just stop here. Thank you for joining. Guys. Thank Have a you. good day.